Yesterday, we had discussed a random variable. What is meant by random variable? Basically, a random variable is assigning some numerical value to the different outcomes of a random experiment. Okay, for example, if we toss two coins, okay, then outcomes are HH, HT, TH, and TT. Okay. Now, if we define a random variable x as the number of head occurs or number of tail occurs, okay, आप कैसे भी define कर सकते हो, right? So if we define x as number of heads, then number 2 is assigned to HH, number 1 is assigned to HT and TH both, and number 0 is assigned to outcome TT. Okay. Now this is called as a random variable. Now in this case, the probability of occurrence of 2 x equal to 2 is what? 1 by 4, because for x equal to 2 there is only one outcome, and that is HH. Okay. So probability of getting 2 means what? Probability of getting HH is 1 by 2. Sorry, 1 by 4. Similarly, probability of x equal to 1 is probability of HT or probability of TH, that is equal to 1 by 4 plus 1 by 4, or it's 2 by 4 or 1 by 2, right? So for any possible value of x, we can assign some probability value. Okay. So the set of values of random variable x along with the corresponding probabilities is called as probability distribution. Okay. Now there are basically there are two types of probability distribution. First is discrete distribution and second is continuous distribution. Further, discrete distribution is divided into two categories. One is finite and second is countable infinite. Okay. For example, if x represent number of say if x represent number of successes in 10 trials, then the possible values of x would be 0, 1, 2, 3, maximum say 10. Okay. But if x represent number of accidents happening on a particular highway during a month or during a year, then possibilities of x are 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है, infinite भी हो सकते हैं, right? So in both the cases, x defined over here is a discrete random variable, while in first case it is a finite and second case it is मतलब number of accident के case में it is countable infinite, because it may take infinite values, okay, ranging from 0 or 1 or 2 or 3 or 5 or 10, 100, lakhs, infinite. So this is a countable infinite, which is again a discrete random variable. And third type is continuous random variable. If your random variable takes uncountably many values, then it is called as continuous random variable. For example, if we represent x as the waiting time for a PMPL bus, okay, on a particular stop. Let us suppose that PMPL runs after interval of 15 minutes. So maximum waiting time would be 15 minutes. Okay. Minimum कितना हो सकता है? Minimum 0. So waiting time could be any value between 0 minute to 15 minutes. Okay, it may be 1 minute, so 30 seconds. Huh? So yes? Sorry to interrupt, sir. So your screen is just with it's a blank screen, right? With binomial random variable. Yeah, I have not changed. Okay. I'm just repeating what we had discussed yesterday. Yesterday. Sure. Thank you, sir. Where we were? If x represent the waiting time for PMPL bus, okay, then maximum waiting time would be 15 and minimum 0. So waiting time may be 1 minute or 2 minutes or 3 minutes or 3 minutes 30 seconds, 3 minutes 30 seconds and
30 millisecond, कुछ भी हो सकता है, right? So here x takes uncountably many values between 0 minute and 15 minutes. So this is a continuous random variable. Now in our syllabus, we are going to discuss 3 random variables: binomial random variable, Poisson random variable, and normal random variable or normal distribution. Okay. Out of which binomial and Poisson are discrete random variable. Again, out of which binomial is a finite random variable, finite and discrete random variable. Poisson is infinite discrete random variable, and normal is a continuous random variable. Okay. Now these three are the most important random variable. There are many more random variables. Okay. हर एक इसमें आपको number of options will be available, but most commonly used are binomial, Poisson, and normal distribution. Okay. Now let's discuss one by one each. Okay. कुछ चीजें हमने कल डिस्कस किए थे. Basically all three random variables assumes that for each trial there are two possibilities. One is called as success and other is called as a failure. If that trial is repeated finite number of times, okay, then we get a binomial random variable. This trial is actually called as a Bernoulli trial. If it is repeated infinite number of times, then we get a Poisson random variable. So basically, Poisson is a limiting case of binomial random variable. Okay, and normal distribution is limiting case of Poisson distribution. Fine. Right. Now let's define binomial random variable. The binomial random variable is defined as a random variable taking finite values 0, 1, 2 up to n is said to follow binomial distribution with parameters np. Okay, if its PMF is given by. Now here n is what? N is the number of times the experiment is repeated or number of trials, and p is probability of getting success in each trial. Okay, ये पक्का ध्यान में रखो. N is what? N is number of times the experiment is repeated or number of trials. Okay, for example, अगर हम coin toss करते 3 times, okay, then what is N? N is 3. If we toss coin 10 times, then N would be 10. Okay. Now further, let us suppose that the coin is a fair coin. Okay. And if we define success as getting head. Okay. If we assume that getting head means a success, then what is chances of or probability of getting success in each trial is 1 by 2. Okay. So here probability or the value of P is 1 by 2. Okay. N is the number of times coin is tossed and P is probability of getting head in each trial. So a random variable X is said to follow Poisson distribution, binomial distribution with parameter NP if probability of X is given by this formula NCX, combination वाला formula NCX into P to the power X into 1 minus P raised to N minus X. Okay. See, logic यहाँ पे simple है. If we get out of 10 tosses, if we get head 4 times, okay, it means that we are getting tail 6 times, right? So if P is probability of getting head, then obviously 1 minus P would be probability of getting tail. Okay. अगर वो fair coin है तो वो दोनों half half रहेंगे, 50% chances of getting head and 50% chances of getting tail. But suppose ऐसा experiment है rolling of a dice, okay. And when we roll a dice, let us suppose that getting 1 and 2 is a success and otherwise failure. So what is the probability of getting 1 or 2? It's 2 by 4 or 2 by 6 or 1 by 3. So probability of getting success is 1 by 3 and probability of getting failure is 1 minus 1 by 3 or 2 by 3. Okay. समझ में आ रहा है? P. So यहाँ पे P क्या है? P represent the probability of getting success in each trial.
Okay, and n is the number of times the coin is tossed or number of times the experiment is repeated. Fine. तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, PMF, that is probability mass function of random variable x. Okay. Fine. Binomial distribution with parameter np is denoted by b in bracket n comma p. Fine. Now let's solve some examples based on binomial distribution. Okay. Example, I think जो notes मैंने circulate किए, from that I have taken examples. First example is 5 pair coins. 5 pair coins are flipped. If the outcomes are assumed independent and x denote number of heads obtained with PMF, find PMF. Also find probability of occurrence of at least 3 heads. Okay. Now what is n over here? 5. N matlab number of trials. 5. So here coin is flipped 5 times. So n is 5. Okay. And if the outcomes assumed independent and x क्या denote कर रहा है? X denote number of heads obtained. तो हम यहाँ पे getting head मतलब getting success ऐसे assume करेंगे. So what is the probability of getting head in each trial? Because coin is a fair coin. So probability of getting head is same as that of tail. So probability of success is 1 by 2. So here random variable x represent or follow binomial distribution with parameter n equals to 5 and p equals to half. So it is actually b 5 half. Right? इसका PMF क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला दिया है मैंने, राइट? यहाँ पे n कितना डालना है आपको? n is 5, x आपका वेरी हो रहा है, ओके? p is 1 by 2, 1 minus p is also 1 by 2 raised to n is 5. So यहाँ पे 5 minus x होगा and x varies from 0 to 5, right? So आपका PMF होगा p of x equal to 5cx into 1 by 2, which is the value of p, whole raised to x into 1 minus half raised to 5 minus x, and x varies from 0 to 5. Okay. X takes values 0, 1, 2, 3, 4 and 5. अब find out क्या करना है? See, first part हो गया PMF. Okay. Now here we want to find the probability of occurrence of at least 3 heads. At least 3 heads मतलब 3 or more. Okay. So what are the different possibilities? We may get 3 head or 4 head or 5 head, because x maximum value of x is 5, because coin are 5 fair coins are flipped, so maximum you will get 5 heads, right? So here the required probability is p of x greater than equal to 3 or p of 3 plus p of 4 plus p of 5. Now to obtain value of p of 3, we'll simply put x equal to 3 over here in this formula. Okay, so p of 3 क्या होगा? 5p3 into 1 by 2 raised to 3 into 1 minus half raised to 2. 5 minus 3 is 2. Okay, similarly p of 4 क्या होगा? 5p4 into 1 by 2 raised to 4 into this 1 by 2 raised to 1. Okay, then I'm leaving calculation part as an exercise. Okay. You can calculate na this, और आंसर इतना रखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. Fine. Wait for 2 minutes. Okay. So वो 5cx होगा या 5px होगा? कौन सा?
px is p equal of to p of 3 निकाल रहे हैं ना. हाँ p of 3 क्या होगा, x equal to 3 डालना है आपको यहाँ पे. So 5c3 into 1 by 2 raised to 3 into this subtraction is again 1 by 2 raised to 5 minus 3. मतलब ये टर्म आ गया पहला टर्म. 5c3 into 1 by 2 raised to 3 into 1 by 2 raised to 2 plus 5p4. 5p4 के लिए क्या करेंगे हम, विल पुट x equal to 4 over here. So ये हो जाएगा आपका 5c4 into 1 by 2 raised to 4 into 1 by 2 raised to 1. Okay, and last term हो गया आपकी x equal to 5. So 5c5 into 1 by 2 raised to 5 into this 1 by 2 raised to 0. 1 by 2 raised to 0 is again 1. So ये आपको कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली ये दोनों मल्टीप्लिकेशन 1 by 2 raised to 5 आ रहा है हर एक टर्म में. So you can take 1 by 2 raised to 5 as a common factor. So inside bracket we will have 5c3 plus 5c4 plus 5c5. 5c3 क्या आएगा? 5c3 would be 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. 5 factorial is 120 divided by 3 factorial is 6 and 2 factorial is 2. So 120 divided by 12 is 10. So 10 into 1 by 2 raised to 5 plus 5c4 is 5 and 5c5 is 1. Okay, so ये हो जाएगा आपका 5 plus 10 plus 5 15 plus 1 16 upon 32. Okay, so आंसर होगा आपका 1 by 2. ठीक हो गया. आंसर अगर इतना रखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. You will get full marks. Okay. Shall I move to the next question? Yes, sir. Okay. On a multiple choice examination with 3 possible answers. See, question आपके वही notes में है. This is question number 2, I guess. On a multiple choice examination with 3 possible answers for each of 5 questions, what is the probability that a student would get 4 or more correct answers just by guessing? मतलब क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट एक MCQ एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा है and wherein he is supposed to answer 5 questions. Each question has 3 answers, 3 possible answers, not answers, 3 possible answers, out of which only one is correct and 2 are wrong. Okay, so suppose किसी एक क्वेश्चन को if student select one option randomly, okay, कोई भी एक ऑप्शन वो टिक करता है without knowing the actual answer, then what are the chances of getting correct answer? 1 by 3. 1 by 3, correct. So here probability of getting success in each trial is 1 by 3. And ऐसे कितने trials ले रहा है वो? 5 questions है. So this also, if x represent the number of correct answers, okay, then x will follow a binomial distribution with parameter n equals to 5 and p equals to 1 by 3. Probability of getting success 1 by 3. Okay, तो यहाँ पे आपको x डिफाइन करना पड़ेगा पहले हर एक क्वेश्चन में. स्लाइड में मैंने नहीं किया है. So x क्या है? What is x over here? Let x represent the number of correct answers. Okay, then x follow binomial distribution with parameters n equals to 5 and p equals to 1 by 3. So that is b is 5, x is b 5 comma 1 by 3.
So this is PMF of X. Okay, got it? वही है, सिर्फ वैल्यूज अभी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. Now here a random variable X takes 6 values 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and PMF is 5CX into 1 by 3. Here P is 1 by 3. In previous question it was 1 by 2. Right? So 1 by 3 raised to X into 1 minus 1 by 3 raised to 5 minus X. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे. Here we are supposed to calculate the probability that student would get 4 or more correct answers. मतलब P of 4 plus P of 5 plus P of 5, right? Okay. Fine. That is equals to find P of 4, will simply substitute X equal to 4. So 5C4 into 1 by 3 raised to 4 into 2 by 3 raised to 1 plus 2 by 3 क्यों आया यहाँ पे? 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. Okay. Plus P of 5 is 5C5 into 1 by 3 raised to 5. Okay. Okay. Now let's move to next question. In a military court, some judges are appointed. A defendant is declared guilty if majority of judges cast vote of guilty and declared innocent otherwise. मतलब ये सिस्टम कौन सा है? इट इज अ ज्यूरी सिस्टम. प्री इंडिपेंडेंस एरा में दिस वाज द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. मतलब पैनल ऑफ जजेस वर अपॉइंटेड. After independence also for few years India has adopted the same judicial system. Okay. Later on it was changed. अभी जज एक ही होता है जज. पहले कैसे होता था? ज्यूरीज, पैनल ऑफ ज्यूरीज used to sit and they give judgments. Okay. You must have watched movie called वो क्या अक्षय कुमार की मूवी थी wherein he Rustom. हाँ रुस्तम. Okay. तो ज्यूरीज बैठते थे ना. So if majority of juries declare the defendant as guilty, then he will be declared as a guilty. Okay. उस टाइप का क्वेश्चन है. In a military court, some judges are appointed. A defendant is declared guilty if majority of judges cast votes of guilty and declared innocent otherwise. Okay. Suppose that when defendant is guilty, each judge vote guilty with probability 0.7. Whereas in case of innocent, this probability drops to 0.3. मतलब क्या है? If the defendant is innocent, then probability that he will be declared as guilty is 0.3. Okay. अगर defendant guilty है तो guilty declare करने की probability है 0.7 for each judge. Okay. And अगर innocent को guilty declare करने की probability है 0.3. Fine. Now the question is, what is the probability that a guilty defendant declared guilty when there are 9 judges? Okay. So यहाँ पे सक्सेस हम क्या assume करके चलेंगे? Guilty defendant is declared guilty will be termed as a success. Got it? So what is probability of getting success? Probability of getting success is 0.7. वहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना, a defendant is guilty, then each judge vote guilty with probability 0.7. So probability of getting success मतलब क्या है? Guilty defendant is declared as guilty. Okay. So probability of getting success over here is 0.7. Okay. Now in this question, 9 judges are there. Now for first judge, the probability of success is 0.7. For second also it is 0.7. Third, fourth, fifth, 9. It is 0.7.
सो मतलब ये क्या है यहाँ पे? सो दिस इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n इक्वल्स टू n क्या होगा यहाँ पे? 9 करेक्ट, बिकॉज 9 जजेस का हम ओपिनियन ले रहे हैं, राइट? सो हियर x follows a binomial random variable with parameter n equals to 9 and p equals to 0.7. ओके, हाँ पहले आपको x डिफाइन करना पड़ेगा. Let x denote the number of judges declared guilty defendant as guilty. Okay, so पहले x define करो. What is x over here? Let x denote the number of judges who declares guilty defendant as guilty. Okay, so in first question, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों में अलग अलग है, because in second question there are 8 judges. So for second question n would be 8. So in first question, x, if x represent number of judges who declares guilty defendant as guilty, then x follows binomial distribution with parameter n equals to 9 and p equals to 0.7. Okay. So what is the required probability? So what is the question is, what is the probability that a guilty defendant declared guilty? ये कब guilty declare होगा? See, a guilty defendant or a defendant, no matter whether he is guilty or innocent, he will be declared guilty if majority of the judges cast vote against him. Okay, मतलब if majority of 9, मतलब कितने होंगे? 5 or more, correct? 6 भी declare करेंगे तो भी वो guilty declare होगा. 6, 7, 8, 9. So if 5 or more judges declare him guilty, then he will be declared as guilty. Okay, so यहाँ पे required probability क्या है? तो PMF हो गया, right? So PMF of x is 9cx into 0.7 raised to x into 1 minus 0.7 raised to 9 minus x. Okay, required probability यहाँ पे होगी probability of x greater than or equals to 5. Okay, that is p of 5 plus p of 6 plus p of 7 plus p of 8 plus p of 9. Got it? सर बैक स्लाइड दिखाओ ना एक बार फिर से. कौन सा? इसके पहले जो था वो वाला. ये वाला? हाँ इसका हाँ, इसमें कोई डाउट है? नहीं, सॉल्यूशन चाहिए था, पूरा सॉल्यूशन है ना? नहीं, अभी ये पूरा डिटेल नहीं है. पहले फर्स्ट स्टेप में आपको x डिफाइन करना पड़ेगा. x क्या है यहाँ पे? Let x represent or let x be the number of judges who declare guilty defendant as guilty. Okay, तो आप जब x डिफाइन करोगे उसी में आपका सक्सेस मतलब क्या है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. यहाँ पे सक्सेस मतलब क्या है? गिल्टी डिफेंडेंट शुड बी डिक्लेयर्ड एज गिल्टी, राइट? सो ये सक्सेस है. ठीक है, फाइन. नाउ कितने जजेस है यहाँ पे? 9 जजेस है. सो x फॉलोज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n इक्वल्स टू 9 एंड p इक्वल्स टू 0.7. ओके, सो PMF होगा इसका 9cx into p raised to x into 1 minus p raised to 9 minus x. ओके, अब अगर 9 में से 5 or more judges declare him guilty, then he will be declared as guilty. Okay, so required probability क्या होगी यहाँ पे? p of x greater than equal to 5. greater than equal to 5 मतलब p of x equal to 5 और x equal to 6 और 7 और 8 और 9. सबका कैलकुलेशन करके आपको टोटल लिखना है. अब यहाँ पे मैंने पूरा लिखा नहीं है स्लाइड में. रिमेनिंग पार्ट आई एम लिविंग एज एन एक्सरसाइज. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है?
P of 4, sorry, P of 5 plus P of 6 plus P of 7 plus P of 8 plus P of 9. करेक्ट. Okay. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट an innocent defendant is declared guilty when there are 8 judges. Okay, so obviously यहाँ पे n equals to 8 हो गया. Now this is different random variable ना. See, पहले क्वेश्चन में क्या था, गिल्टी डिफेंडेंट को गिल्टी डिक्लेयर करना है. ओके, अब यहाँ पे क्या है, इनोसेंट डिफेंडेंट को गिल्टी डिक्लेयर करना है. सो व्हाट इज x ओवर हियर? So let x in second example we'll assume that x is the number of judges who declares innocent defendant as guilty. Okay, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन में? दोनों में x अलग अलग है, प्रोबेबिलिटी आपको अलग अलग निकालनी है, राइट? सो इन सेकेंड एग्जाम्पल या चाहे तो x की जगह पे वेरिएबल y ले लो. Okay, let y be let y represent the number of judges who declare innocent defendant as guilty. Okay, so innocent को guilty कर रहे. So in this example, success means innocent is declared as guilty. Correct? लॉजिक समझ में आ रहा है? एक्चुअल टर्मिनोलॉजी में वो एक्चुअली फेल्योर है, राइट? बट as far as this question is concerned, if innocent defendant is declared as a guilty, we term it as success. So probability of getting success over here is 0.3. Correct? Innocent को guilty declare करने की probability कितनी है? 0.3. Got it? So here y represent or y follows binomial distribution with parameter n equals to 8 and p equals to 0.3. Okay. आप x ले सकते हो, to avoid confusion you can take variable y. So इसका PMF क्या होगा? So p of y equals to 8cy into 0.3 raised to y into 1 minus 0.3 raised to 8 minus y. And again यहाँ पे भी मेजॉरिटी है, 4 मतलब मेजॉरिटी नहीं होती यहाँ पे. See, in total there are 8 judges are there. So 4 is not a majority. Majority is more than 50%. That is 5 or more. So here also the required probability is p of y greater than or equal to 5. Okay. That is p of 5 plus p of 6 plus p of 7 plus p of 8. Got it? Sir, then there must be one when we want to confirm our answer, that every time our right answer, right probability will be more than of 50% of our total space, which is total number of. नहीं, necessary नहीं है. It's not necessary. Basically, it depends on the value of p. Okay. p यहाँ पे 0.3 है, so ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ पे कम ही होगा. ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा मतलब दिमाग में मिसकंसेप्शन मत डाल के रखो. वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. 0 एंड 1 के बीच में ही होगा आंसर. बट 50% के ऊपर they have not mentioned 50% ना सर? नहीं, बट मेन क्वेश्चन तो वही है ना. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है? A defendant is declared guilty no matter whether he is innocent or guilty. If majority of judges, वो सिस्टम वैसा ही था ना, अगर 50% और more judges declare him guilty whether he is innocent or guilty, अगर majority लोगों ने guilty declare किया तो वो guilty होता है, right? तो इस केस में क्या है, उन्होंने बोला कि what is the probability that an innocent defendant is declared guilty? Okay, तो वो कब डिक्लेयर होगा? इफ 5 और मोर जजेस डिक्लेयर हिम गिल्टी. ओके, ठीक है. सो 5 और मोर मतलब p ऑफ y greater than or equal to 5. Let's solve one more question.
It is known that 40% TB patients die every 6 years. 6 patients are admitted in a hospital suffering from TB. What is the probability that 3 patients will die, at least 5 patients will die, all patients will be cured, and no patient will be saved? Okay. So यहाँ पे कैसे करेंगे? P is equal to 0.4 हो जाएगा. ओके, मतलब तुम x क्या डिफाइन कर रहे हो? That success is that patients die of TB. Okay, x मतलब क्या है? Let x represent the number of patients died due to TB. Okay. So here probability of success मतलब patient dies. Okay. So what is n over here? 6. 6 patients are admitted. So हर एक की probability of fatality is 0.4. Okay. Or you can define x as number of patients survived. Okay. So probability of survival would be 0.6. See, it is up to you. आप कैसे define करते हो उसके हिसाब से सब चलेगा. So if you define x as the number of patients died, in that case your p will be 0.4. Okay. If you represent x as number of patients survived, then p will be 0.6. Got it? आप कैसे define करो? So the defining random variable x is important step while solving such type of questions. Okay. So ठीक है, we assume that x represent number of patients died. So here x follows binomial distribution with parameter n equals to 6 and p equals to 0.4. Okay. So here death मतलब success हो गया यहाँ पे. ठीक है. अब पहला क्वेश्चन क्या है? 3 patients will die. मतलब p of 3 निकालना है. अब यहाँ पे मैंने और थोड़ा शॉर्टकट लिया है. Here I have not defined PMF. PMF क्या होगा यहाँ पे? PMF would be 6c p of x equal to 6cx into 0.4 raised to x into 1 minus 0.4 raised to 6 minus x. Okay. आप लिख पाओगे ना प्रीवियस? Please repeat. यहाँ पे n क्या है? n is 6 and p is 0.4. तो जस्ट वो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था ना, उसमें वैल्यूज डाल दो. सो p ऑफ x क्या होगा? 6cx. n की जगह पे 6 डालना है आपको. ओके. एंड p की जगह पे 0.4. सो 6cx into 0.4 raised to x into 1 minus 0.4 bracket raised to 6 minus x. Correct? Yes, sir. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट 5 पेशेंट विल डाई. मतलब 5 और 6. That is p of 5 plus p of 6. Third question. All patients will be cured. मतलब probability of x equal to all will be cured. 0. Correct. Probability of 0. All will be cured मतलब all are survived or no patient died. So p of 0. Okay. And second, no patient will be saved. That is P of 6. no one is survived. So p of 6. See, मैंने अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट सॉल्व किया, आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस, राइट?
ये हो गया. Rest of the part is left as an exercise. Okay. Next question. The probability of a bomb hitting a target is 0.20 or 0.2. 2 bombs are enough to destroy a bridge. If 6 bombs are aimed at the bridge, find the probability that the bridge will be destroyed. So X क्या लेंगे यहाँ पे? That the bomb destroys the bridge. नहीं, एक बॉम्ब हिट करेगा तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना ब्रिज. Let X represent number of bombs hitting the target. Okay. 6. So let X represent number of bombs hit the target. So probability of getting success is 0.2. Fine. So आपका X क्या होगा? X follows binomial distribution with parameter n equals to n 6 हो जाएगा and p 0.2. Okay. Now the question is, what is the probability that the bridge will be destroyed? कैसे करेंगे? See, bridge कब destroy होगा? If जब 2 बॉम्ब लगेगा. See, it is given that 2 bombs are enough to destroy a bridge. हाँ, at least 2 bombs लगेंगे ना. See, अगर सिर्फ out of 6 only 1 bomb hits the target, bridge destroy नहीं होगा. या कोई भी bomb hit नहीं करेगा तो obviously bridge survive करेगा. Fine. But bridge will be destroyed if at least 2 bombs hit the target. Okay. So यहाँ पे required probability होगी P of X greater than equal to 2. Okay. So that is equal to P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5 plus P of 6. अब ये थोड़ा सा calculation part difficult है. Here we can use complement method. Okay. Probability of destroying the bridge is same as the 1 minus probability of not destroying the bridge. Okay. ये कुछ theorems है ना हमने डिस्कस किए थे. Complement method. So probability of A complement is equals to 1 minus probability of A, or probability of A equals to 1 minus probability of A complement. So the required probability would be 1 minus probability of X less than 2, that is 1 minus probability of 0 minus probability of 1. तो ऐसा भी कर सकते हैं या डायरेक्टली यू कैन डू P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5 plus P of 6. इस केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो कंपैरेटिवली ये इजी है. ओके. नाउ कुछ और हम सम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सिर्फ डिस्कस करेंगे, बाकी आप घर पे सॉल्व करो. एग्जांपल नंबर 6 वी हैव डिस्कस्ड. एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने थोड़ा सा लीव किया था, बट यू कैन इजीली सॉल्व. अ डाई इज थ्रोन 6 times. If 1 to 3 appears on the upper face, then it is considered as failure. 4 to 6 appear on the upper face, then it is considered as success. Okay. So what is probability of success? If we get 4 or 5 or 6, then we consider it as a success, right? So what is probability of getting success? Is 3 by 6. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में. इट इज नॉट गिवन दैट इट इज अ अनबायस्ड डाइस. सिर्फ मेंशन क्या है, अ डाई इज थ्रोन 6 times. तो ऑब्वियसली n इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पे, बट नथिंग is mentioned, so we'll assume that the die is a unbiased dice. So the outcomes are equiprobable.
So probability of getting 1 or 2 or 3 सबकी probability same है. So probability of getting 4 or 5 or 6 मतलब probability of success is 3 by 6, that is 1 by 2. Okay, तो ये हम यहाँ पे assume करेंगे. So this is a binomial distribution with n equals to 6 and p equals to 1 by 2. 4 successes out of 6 trials. So find out क्या करना है यहाँ पे p of 4. Second question में at least 4 successes मतलब p of x greater than equal to 4. 4 or 5 or 6. P of 4 plus P of 5 plus P of 6. Okay. Question number 7 same है. A die is tossed 3 times. What is probability of no 5 turning up? Second question 1 5 and third question 3 5s. So here we'll define x as number of times 5 turning up. Okay. So probability of success हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 by 6. Correct. पाई आया मतलब सक्सेस हम एज्यूम कर रहे हैं. सो p would be 1 by 6 and n 3. Question number 8 similar है TB पेशेंट जैसा. ओके, यहाँ पे फैटेलिटी रेट है 75%. सो प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट डाई इज 0.75. Sir, I just had a question, sir. I just had a doubt. Sir, example 7, sir, हम classical approach से कर सकते हैं technically? क्या कर सकते हैं? Example 7. हाँ. Classical approach से भी solve कर सकते हैं, right? हाँ, कर सकते हैं नो इशू. बट यहाँ पे कितने आउटकम रहेंगे? 6 into 6 into 6. करेक्ट ना? तो ये डिफिकल्ट होगा वैसे, क्योंकि फिर 6 into 6 into 6 मतलब 216. राइट. सो डिनोमिनेटर होगा 216 एंड नो 5 टर्निंग अप. तो फिर वो तुम्हें काउंट करने पड़ेंगे ना. ऐसे कितने आउटकम्स है जिसमें 5 नहीं है. राइट. फिर ऐसे कितने आउटकम है जिसमें एक 5 है. ठीक है. 3 5 का तो कोई इशू नहीं है, ऐसा एक ही आउटकम होगा. ऑल 5 है ना. 5 5 5 इज द ओनली आउटकम. बट 1 5 के लिए कितने आउटकम्स रहेंगे? बहुत सारे. मतलब 36 3 times 36 इतने रहेंगे आउटकम. सॉरी, थोड़ा कम हो जाएंगे. तो ये डिफिकल्ट होगा क्लासिकल अप्रोच से करना. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन ओल्ड एज देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 of success in any attempt to make a telephone call. So probability of getting success is 0.8. Calculate the probability of having 7 success in 10 attempts. मतलब n equals to कितना हो जाएगा यहाँ पे? n is 10. कितने बार हमने ट्राई किया? 10 times. So out of 10 कितने बार हमें फोन कॉल सक्सेसफुली कनेक्ट हुए? 7 times. So p of 7 निकालना है. p of 7 where x represent a binomial random variable with n equals to 10 and p equals to 0.8. Okay. Question number 10 भी easy है. टारगेट हिट कर रहा है. he hits the target 4 times out of 5. मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 by 5. Probability of getting success is 4 by 5. Right, or 0.8 you can consider. 4 by 5 मतलब 0.8. If he fires 4 shots, मतलब n equals to 4 होगा यहाँ पे. Okay, what is the probability that more than 2 hits? So p of x greater than 2, more than 2 hits, equal to 2 नहीं होगा यहाँ पे. So p of 3 plus p of 4. Okay, and
at least 3 misses. PF1. मतलब at most 1 hit. At least 3 miss मतलब at most 1 hit. So यहाँ पे P of 0 plus P of 1. Correct? Okay. बट सर यहाँ पे स्मॉल p क्या होगा फिर? स्मॉल p 4/5 ना, यहाँ पे दिया है ना, पहला सेंटेंस देखो ये Yes, ब्लाइंड, yes, yes, yes. हाँ ठीक है ना, 4 out of 5 ना, so probability of hitting target Yes. is 4/5 और 0.8 and n equals to, उसके बाद हमने वो एक्सपेरिमेंट क्या है, 4 शॉट्स वो हिट कर रहा है, so n equals to 4 एंड फिर आगे प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे क्या है, हियर रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज गिवन, ओके, so ratio is 1.09 is to 1 or you can say 109 is to 100, okay, so the probability of getting a boy, हम assume करेंगे x define करेंगे probability of getting boy, fine, so टोटल 209 में से 109 आपके बॉयज है, करेक्ट, रेशियो क्या दिया है बॉयज टू गर्ल्स इज 109 is to 100 और 1.09 is to 1, okay, so we want to find probability of getting a boy, right, so probability of getting a boy is 109 divided by 109 plus 100, और अगर हम पॉइंट में रेशियो लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, 1.09 डिवाइड बाय 1.09 प्लस 1, so this probability यहाँ पे मैंने हिंट दिया है, so here p is 0.5215 and n is with proportion, what proportion of families with exactly 6 children will have at least 3 boys, okay, so n equals to 6 लेना है हमें and p of x Greater or equal to 3. greater than equal to 3 कैलकुलेट करना है, राइट, एंड यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, प्रोपोर्शन पूछा है, राइट, सो आपको आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट, फॉर एग्जांपल सपोज p of x greater than equal to 3 आ गया आपका 0.6, ओके, so proportion क्या हो गया 60%, so 60% of the families have at least 3 boys, got it? ठीक है, similar question आप try for example number 12 and 13. Now we'll move to Poisson distribution. इसका definition आप note down कर लो. A discrete random variable taking values 0, 1, 2 dash dash infinite है, so it is a discrete but countable infinite random variable. Poisson कैसे था, sorry binomial कैसे था आपका 0, 1, 2 up to n, n may be 3, 4, 5, 6, 10, okay, but here random variable x may take value 0 or 1 or 2 or 3 or 5 or infinite, okay, so discrete random variable x taking values 0, 1, 2, 3 dash dash is said to follow Poisson distribution with parameter lambda, okay, for some lambda greater than 0 if its PMF is given by this formula, p of x equal to e to the power minus lambda into lambda raised to x divided by x factorial for x equal to 1, 2, 3 up to infinity, okay, e एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे पाई होता है कांस्टेंट वैसे e इज अ स्टैंडर्ड कांस्टेंट, उसके approximate value of e is 2.707, एक्चुअली वो it is an irrational number, वो endless है, but the approximate value of e is 2.707, okay. Fine, now the parameter lambda
in the PMF of Poisson distribution represent arithmetic mean of random variable x. Arithmetic mean मतलब average. अब ये इसका डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन पार्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस. हाउ लैम्डा रिप्रेजेंट पीएमएफ, हाउ लैम्डा रिप्रेजेंट अरिथमेटिक मीन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस. सो हम यहाँ पे सिर्फ उसका यूज करेंगे टू सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. पी ऑफ एक्स इज e to the power minus lambda into lambda raised to x divided by x factorial. ठीक, आपको in examples, the value of e to the power minus lambda will be given to you. Okay, तो आपको सिर्फ substitution करना है and answers निकालना है. Okay, let's discuss few questions based on Poisson distribution. The average number of misprints per page of a book is 1.5. Calculate the probability that there is at least one misprint on a page. See, यहाँ पे x क्या है? What x represent? Here x represent the number of misprints. Okay. Now, the number of misprints may be 0, maybe 1, 2, 3, 4. Maximum कितने हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, राइट? हाँ, टेक्निकली इनफाइनाइट इतने होंगे क्योंकि पेज पे कितने होते थे. बट there is a theorem called as Poisson is a limiting case of binomial distribution. So if we increase the value of n in binomial distribution, the binomial distribution approaches to Poisson. Normally अगर 15-20 से ज़्यादा हो गई वैल्यू n की, then binomial distribution से बेटर आपको Poisson से रिजल्ट मिलता है. ओके, मतलब binomial distribution is same is as good as the Poisson distribution. Okay, for n maybe more than 30, right? So यहाँ पे 30 और more misprint हो सकते हैं. Chances may be very less, but it is possible. We cannot say that it is impossible to have more than 30 misprints on a page. Okay, so here it is given that average number of misprints per page is 1.5, right? So arithmetic mean, if we represent x as number of misprints per page, so arithmetic mean of x is 1.5. It means that lambda over here is 1.5. Okay, because see यहाँ पे क्या है, the parameter lambda in PMF is arithmetic mean of random variable x. Okay, so here lambda is 1.5. Okay, so here x follows Poisson distribution with parameter lambda equals to 1.5. पहले आपको x define करना है. What is x over here? Let x represent the number of misprints on a page. Okay, so x follows Poisson distribution with parameter lambda equals to 1.5. Therefore, PMF of x is e to the power minus lambda. Lambda over here is 1.5 into 1.5 raised to x divided by factorial x. Okay. अब find out क्या करना है हमें? Here we want to find the probability that there is at least one misprint. Okay, मतलब probability of x greater than or equals to 1. Okay, अगर हम normal method से करेंगे तो इसका कैसे होगा? P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of 5 up to infinity. It is not possible to find this probability. So here we'll use complement method. The probability of x greater than or equal to 1 is nothing but P of x 1 minus probability of x equal to 0. No misprint. Okay, it is complement of no misprint. So 1 minus P of x equal to 0. That is equal to, so we'll put x equal to 0 in the formula of PMF. So e to the power minus 1.5 into 1.5 raised to 0. Anything raised to 0 is 1 divided by 0 factorial, and 0 factorial is 1. Okay. And the value of e to the power minus 1.5 is given in the question.
0.223. So after substituting, we get probability as 0.777. Okay, got it? सर जो एक सम किया था हमने पहले भी, हाँ, तो उसमें भी यही मेथड यूज किया था राइट हमने? कौन सा? इसके हाँ, वो पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वो। हाँ उसका पीएमएफ अलग था। हाँ, उसमें पीएमएफ अलग था ना। 1 minus P0 राइट? P0 हाँ, कॉम्प्लीमेंट मेथड ना, कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट वन मिसप्रिंट। एटलीस्ट वन मतलब 1 misprint or 2 misprints or 3 or 5 or 6 और infinite। ये कैलकुलेशन करना मतलब आपको उतने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे ना। So instead we'll use complement method। Complement method मतलब क्या है? See, if in a classroom, in a class of 60 students, if 2 are girls, okay, the remaining so one is हाँ B dash मतलब remaining, मतलब हाँ A मतलब हाँ कॉम्प्लीमेंट उसका, राइट। अब यहाँ पे suppose you were asked to count the number of boys. Now it is easy to count number of girls, na? I know total strength of the class. Total strength is 60. Out of 62 are girls, so 58 must be boys. So girls count करना easy है. Similarly, we know that the total probability is 1. Okay. So 1 में से हम क्या माइनस कर देंगे? Probability of its complement. Right? मतलब सेम क्वेश्चन हो गया। बॉयज काउंट करने के जगह हम क्या करेंगे? विल काउंट द गर्ल्स एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Sir, I just had one doubt, sir. How do you know which method to use? I mean, कौन सा poison लेना है या binomial लेना है? हाँ, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपका रैंडम वेरिएबल x कैसे वैल्यूज ले रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था 6 बॉम्ब्स हिट किए थे एंड इफ x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉम्ब्स हिटिंग द टारगेट, सो x के वैल्यूज क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 के आगे नहीं जाएगा ना, करेक्ट? या फिर नंबर ऑफ जजेस डिक्लेयरिंग गिल्टी, मैक्सिमम आपके 9 होंगे, करेक्ट? तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो रहा है, तो उस केस में आपको बाइनोमियल यूज करना है। पॉइजन में कैसा है? पॉइजन इज काउंटेबल इनफाइनाइट रैंडम वेरिएबल, मतलब 0 1 2 3 4 एंड ही नहीं उसका, करेक्ट? और इवन अगर एंड है एंड द वैल्यू इज टू लार्ज, एन की वैल्यू अगर 30 और मोर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, हाँ बोलो। जहाँ पर टोटल स्पेस इनफाइनाइट रहेगा वहाँ पर हम लोग पॉइजन यूज करेंगे। जहाँ पे लिमिटेड टोटल क्या क्या बोला तुमने? टोटल स्पेस टोटल, हाँ मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, इफ एक्स टेक्स अनकाउंटेबली मेनी वैल्यूज। जैसे यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी आर डिफाइनिंग x एज नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स। अब नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स आपके 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, तो एंड नहीं है वहां पे, तो उस केस में हम पॉइजन यूज करेंगे, करेक्ट? थैंक यू। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ हाईवे, अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन तो कंप्लीट किया है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ हाईवे ड्यूरिंग अ मंथ follows Poisson distribution। अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया है आपको Poisson distribution है, okay, with mean 5। so what is lambda over here? lambda मतलब 5, okay, because the parameter lambda in PMF of Poisson distribution represents arithmetic mean, okay, so lambda is 5। So here we want to find probability that less than 3 accidents happened on a highway, ठीक है। ठीक, अगर यहाँ पे मेंशन भी नहीं करते पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो x क्या रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ, बिकॉज x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट वुड बी 0 और 1 और 2 और 3 और 5 और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ना। ऐसा नेसेसरी नहीं कि 10 से बिलो एक्सीडेंट होंगे या 20 से लेस देन 20 एक्सीडेंट्स विल हैपन, हम ऐसे गारंटीड नहीं बोल सकते ना।
सो यहाँ पे x की वैल्यू का कोई एंड नहीं है, सो विल अप्लाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, अगर नहीं भी मेंशन होता तो हम वी कैन मतलब थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो इट फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना है, लेस देन 3 एक्सीडेंट्स ऑफ कर्व्स। ये तो हो गया PMF, दैट इज P of x लेस देन इक्वल टू 3। सो P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3। वेट अ मिनट, लेस देन 3 है, इक्वल टू 3 नहीं है, यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन क्या है, लेस देन 3 एक्सीडेंट ऑकर्स। तो P of x स्ट्रिक्टली लेस देन 3, मतलब P of 0 plus P of 1 plus P of 2 नहीं चाहिए हमें, लेस देन 3। सेकेंड क्वेश्चन, बिटवीन 3 and 5, मतलब P of 3 plus P of 4 plus P of 5। मोर देन 5 मतलब P of x greater than or equals to 6, okay, और greater than 5। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना पड़ेगा, 1 minus P of 0 plus P of 1 plus P of 2, okay, up to 5, right? So we'll take addition of P of 0, P of 1, P of 2 up to P of 6 and subtract that addition from 1, so we'll get required probability. So let's discuss few more questions. Question number 3. सर हाँ, सर थोड़ा ऊपर से जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है सर, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है हम लोगों का, okay. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन बाइनोमियल और अभी ये पॉइजन भी उसी टाइम ले रहे हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, एक काम करो, यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन। अगर कोई डाउट है तो ठीक है, विल स्टॉप टुडे ओवर हियर, ट्राई फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनी डाउट विल डिस्कस टुमारो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। देख लो, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम पॉइजन के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे पहले, if you have any, otherwise we'll go to we'll straight away start normal distribution. Fine. ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। Okay. हाँ, हेलो yes. हाँ बोलो। सर जो